Hey guys, welcome back to another video, and today we will discuss about back lever. So let's begin. The girls with their nails done now. बैक लीवर कैलिस्थेनिक्स में एक बहुत अच्छी स्किल है जो बिगनर्स और इंटरमीडिएट ईजिली अचीव कर सकते हैं। ये शोल्डर एक्सटेंसिबिलिटी स्ट्रेंथ और बैक के मसल्स को स्ट्रेंथन करता है और ये पहली स्किल है जो कैलिस्थेनिक्स में एथलीट अचीव करते हैं या ट्राई करते हैं करने को। इट टेक्स अ लॉट ऑफ एब्डोमिनल एंड शोल्डर स्ट्रेंथ एंड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ हिप स्ट्रेंथ टू होल्ड योर बॉडी इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन। फॉर बैक लीवर यू नीड टू हैव शोल्डर मोबिलिटी। शोल्डर मोबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है बैक लीवर के लिए। तो फर्स्ट प्रोग्रेशन जो हम करेंगे वो है स्किन द कैट। रेज योर लेग्स अप टू योर चेस्ट हाइट एंड रोल बैक। कीप योर एल्बो स्ट्रेट एंड गो डाउन एज स्लो एज पॉसिबल। फिर कम बैक टू द स्टार्टिंग पोजीशन स्लोली। रिपीट दिस मूव 7 to 8 times. This will help to create shoulder mobility and shoulder strength. Now the second progression, tucked back lever. जैसे स्किन द कैट में किया था सेम उसी फॉर्म में नीज टक करके रोल अपसाइड डाउन। कीप योर एल्बो स्ट्रेट एंड टक योर नीज टू योर चेस्ट and hold this position for 5 to 10 seconds and become comfortable. Now third progression, advanced tucked back lever. Just repeat the same movement of tucked back lever. बस जब 10 सेकेंड से ज़्यादा का होल्ड हो जाए tucked back lever का तभी इसे ट्राई करना। In advanced tuck, move your knees slightly away from your chest. Your back will be rounded and scapula को protract करना। ट्राई करो 5 से 10 सेकेंड का होल्ड करने का, फिर ही फोर्थ प्रोग्रेशन में मूव करना। Now fourth progression, one leg back lever. Keep your back a bit rounded and scapula protracted. एक लेग को एक्सटेंड करो and point your toes and keep the other leg tucked. If possible, hold for 5 seconds each leg. Remember to hold and extend both of your legs alternatively. When you can hold it for more than 7 seconds, then you're very close to achieve back lever. Now, the fifth progression is the negatives or eccentric movement. Go in a back lever position. अपने अपर और लोअर बॉडी को टाइट रखना एंड पॉइंट योर टोज आउट एंड फ्रॉम द टॉप कम डाउन स्लोली एज स्लो एज पॉसिबल कीपिंग द होल बॉडी एंगेज्ड. डू दिस फॉर 5 to 7 reps for 2 sets. नाउ few extra tips. Whenever you do a back lever, अपने एल्बोज को लॉक रखो और एब्डोमेन और बैक को टाइट, स्कैपुलास को प्रोट्रैक्टेड रखो, अपने हिप्स को टाइट कर लो और टोज को पॉइंट करो so that you perform a clean and strict back lever which looks good.